हेलो फ्रेंड्स मुझे स्वागत करुँच इंग्लिश गेन एजुकेशन को। चलतु आज आम पढ़ा बीएड फर्स्ट सेमिस्टर पर्सपेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंट तार यूनिट 3 आज आम पढ़ा। यूनिट 3 रोचे चाइल्डहुड आज ए पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन। चलतु आ विषय पढ़ा तार कैरेक्टरिस्टिक गुड़ाक पढ़ा देखिए। चलतु देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंटल टैक्स देखो शिशु वैशिष्ट्य। चलतु देखा देखो इन द ग्रोथ प्रोसेस फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड देयर आर 3 क्लियर कट एंड डिस्क्रीट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ when one is said to become suddenly different in one stage from the previous stage। देखो एथरे कोन कहिछि ना जो बाल्य काल रु वयस्कता पर्यंत जो अभिवृद्धि प्रक्रिया रे तीनोटी हमर स्वच्छ आ कोन ना पृथक पर्याय रहिछि। जे जण जेतबे कोन होइना देखिथिबे जनकर हठात भिन्न जणे जनकर भिन्न हेबाको भिन्न होई थाए। देखो this means the process of development never ends with the child passing from one stage of development to the next, one stage merges with the next and that next with the forthcoming। देखो से कोन करे ना केते ता प्रोसेस मीनिंग होछि डेवलपमेंट जेतोले नेवर एंड माने से जो डेवलपमेंट रो प्रोसेस होछि कोन ना सेटा केते भी एंड हुएनी। तो से देखो विद द चाइल्ड पासिंग फ्रॉम वन स्टेज से गोटे चाइल्ड जेतोले गोटे स्टेज पास करि दोछि माने गोटे तार स्टेज सरी जाउछि तो ता जो डेवलपमेंट नेक्स्ट स्टेज पई से रेडी हे जाउछि माने नेक्स्ट स्टेज पई रेडी हे जाउछि। सेटा केमति वन स्टेज merges with the next and that next with the forthcoming। देखो नेक्स्ट देखो द क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेड बाय मेनी साइंटिस्ट इन द वन गिवन इन द फॉलोइंग लाइन्स देयर स्टडी ऑफ डेवलपमेंट इज बेस्ड अपॉन दिस क्लासिफिकेशन। देखो केते बडे माने जो साइंटिस्ट अछंती ताको मन रे देखो से माने एटा को क्लासिफिकेशन करछंती। देखो ताको मन रे ना प्रीनेटल गोटे पीरियड होची प्रीनेटल पीरियड, सेकंड होची चाइल्डहुड पीरियड, थर्ड पीरियड होची एडोलेसेंस पीरियड, फोर्थ पीरियड होची एडल्टहुड पीरियड। देखो तो प्रीनेटल पीरियड होची फ्रॉम कन्सेप्ट टिल 250 टू 300 डेज। कन्सेप्ट पीरियड ता कोन से जेते बडे कन्सेप्ट करि थाए। नेक्स्ट देखो जो चाइल्डहुड अछि देखो देखो चाइल्डहुड पीरियड देखो फ्रॉम बर्थ टू द एज ऑफ 12 इयर्स। चाइल्डहुड पीरियड होची जो हमरो आद्य बाल्यावस्था जोटा सेटा होची कोन हमरो होची जन्म रु 12 वर्ष पर्यंत जो समय अवधि सेटा को हम चाइल्डहुड बा आद्य बाल्यावस्था जोटा हम कहि थांते। देखो नेक्स्ट देखो जोटा एडोलेसेंस देखो 13 रु 19 वर्ष। एडोलेसेंस पीरियड कोन ना हमरो 13 रु 19 वर्ष जा को हम युवावस्था बोली कहि थाउ। नेक्स्ट देखो एडल्टहुड कोन ना 20 वर्ष रु अधिक 20 इयर्स एंड अबव। देखो एटा कोन ना वयस्कता जो पीरियड रही 20 वर्ष रु अधिक। देखो हमरो जो कन्सीव पीरियड रोची देखो प्रीनेटल पीरियड रे जो देखो तो सेतरे रोची जर्मिनल जो रोची सेटा 0 टू 2 वीक्स मध्ये तार जर्मिनल पीरियड ता थाए। एम्ब्रियोनिक पीरियड तार कोन ना 2 टू 10 वीक्स मध्ये थाए। देखो फोटल पीरियड तार जोटा 10 वीक्स टू 10 वीक टू जन्म होबा पर्यंत जो समय अवधि सेटा फोटल अवधि कहंती। नेक्स्ट देखो चाइल्डहुड रो देखो तार इन्फेंसी जो पीरियड ता हम ताको जोटा कि शैशवावस्था कहि दउ। देखो फ्रॉम बर्थ टू एन एज ऑफ 2 इयर्स देखो जन्म ठारू 2 वर्ष बयस अवधि के हम शैशवावस्था बा इन्फेंसी पीरियड जोटा को हम कहि थांती। नेक्स्ट देखो इयरली चाइल्डहुड कोन ना हमर जो चाइल्डहुड रो दीटा ताको पार्ट करा जाय गोटे होची इयरली चाइल्डहुड नेक्स्ट आ गोटे होची लेट चाइल्डहुड। इयरली चाइल्डहुड होची हमर 3 रु 6 वर्ष मध्ये जो अवधि थाए टाइम पीरियड को हम इयरली चाइल्डहुड बोली कहि दउ। लेट चाइल्डहुड कोन ना हमर प्रांत बाल्यावस्था जोटा कि बाल्यावस्था शेष स्टेज ता सेटा बयस तार अवधि होची समय सीमा तार 6 रु 12 वर्ष बयस जो टाइम टेबल पीरियड को हम लेट चाइल्डहुड बोली कहि दउ। तो हम एडोलेसेंस एडल्टहुड देखले। नेक्स्ट देखो फॉर कन्वीनियंस ऑफ स्टडी हियर वी विल क्लासिफाई द डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल एज फॉलोज। देखो एटी केते देखो कोन ना व्यक्ति रो जो तार डेवलपमेंट विकास रो श्रेणीभुक्त करा जाय। देखो एटी कोन ना प्रीनेटल पीरियड देखो अछि प्रीनेटल पीरियड देखो तार फ्रॉम कंसेप्शन टिल बर्थ कंसेप्शन तार आरंभ करी जन्म होबा पर्यंत हम कहितली। देखो नेक्स्ट देखो इन्फेंसी होछि कोन ना बर्थ टू देखो जन्म रु एटा होछि 2 वर्ष बा 3 वर्ष के मिस्टेक रे 5 वर्ष लिखा जाय। नेक्स्ट देखो चाइल्डहुड पीरियड हमरो 6 रु 12 इयर्स हमें कहि दउ जेटा प्रांत बाल्यावस्था जोटा। नेक्स्ट देखो एटा चाइल्डहुड हमरो रहबो एटा बर्थ टू 12 इयर्स एटा मिस्टेक रे 6 हेछि टाइपिंग मिस्टेक अछि एटा को न धरिले चलिबो। देखो नेक्स्ट देखो एडोलेसेंस कोन ना एडोलेसेंस पीरियड जोटा हमरो रहछि 12 टू 9 इयर्स 12 टू 20 इयर्स देटा हमें पढिले। नेक्स्ट देखो pregnancy lasts for about 280 days. In some very exceptional cases it goes even up to 334 days or so. In some it may last even less than 280 days। देखो एटी जो प्रेगनेंसी तार गर्भधारण जोटा सेटा हमर 280 दिन पर्यंत थाए किंतु केतेक क्रिटिकल केस रे देखिया को मिले जे सेटा माने 334 दिन पर्यंत मध्ये जाय पारे 334 मध्ये ता पीरियड ता जाय पारे किंतु तार मैक्सिमम जोटा सेटा होची तार 280 मिनिमम जोटा तार होची सॉरी मैक्सिमम जोटा तार 280 डेज ता जाय। नेक्स्ट देखो द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट मे बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग 3 स्टेजेस which we shall study below। देखो the ovum and germinal stage गोटे रोची तापर सेकंड रोची द एम्ब्रियो स्टेज एंड थर्ड होची द फेटल स्टेज। देखो फर्स्ट कोन ना ओवम जो जर्मन स्टेज ता तापर रोची द एम्ब्रियो स्टेज जोटा हमरो भ्रूण जेते कॉन्सेप्ट करते जेते भ्रूणटा थाए तो सेटा होची तार एम्ब्रियो स्टेज। नेक्स्ट देखो 3 नंबर पॉइंट देखो फेटस पर्याय। देखो नेक्स्ट देखो सम ऑफ द कंक्लूजन्स अराइव्ड एट थ्रू दिस स्टडीज आर देखो conclusion देखो तार केते देछि इन द फर्स्ट 2 months द साइज ऑफ द हेड इज हाफ द साइज ऑफ द एंटायर बॉडी। देखो तार एंटायर बॉडी रो तार जो हेड साइज ता तार सेटा अधिक थाए 2 months भितरे इन फर्स्ट 2 months भितरे। इन द 10th month the head is reduced to 1/4 of size of the body। से कोन कहते जेतले 10 month हे जाय थाए तो तार हेड ता जो कोन हे सेटा होची रिड्यूस हे जाय थाए ता बॉडी तुलना रे 1/4 साइज रो रिड्यूस हे जाय थाए। नेक्स्ट देखो आफ्टर द 14th week the movement of the photos become perspectively। देखो जेतले से 14th week रो होई जाय थाए जेतले से जो घंटा 14th week रो होई जाय थाए से मूवमेंट ता जोटा फोटोस सेटा परसेप्टेबल सेटा कोन ना जणा पड़ी थाए से जोटा से जो मूविंग ता तार जणा पड़ी। देखो नेक्स्ट देखो इन 4 months the movement of the photos become more complex। देखो इन 4 months
the moment as the photos become faster and more complex this देखंतु एटा कोन देछि ना हमरो फोर्थ पॉइंट रे ना जतबे हमरो होछि 4 मासर होई दे तरे गर्भस्थ से जो शिशुर तार गतिटा शीघ्र होई थाय और जटिल मध्ये होई थाय नेक्स्ट देखंतु this action and reaction is fully influenced by the internal and the external environment देखंतु ए जो कार्यटी द्वारा प्रतिक्रिया बा अभ्यंतरीण होई थाय एवं बाह्य परिवेश द्वारा संपूर्ण प्रभावित मध्ये होई थाय नेक्स्ट देखंतु फर्स्ट देखंतु infancy the term infancy is used to describe the period from the birth of the child till he attains the age of 5 years देखंतु 5 वर्ष पर्यंत तार जो इन्फान्सी होची इन्फान्सी टर्म ता तार यूज होई थाय तार जन्म रु 5 वर्ष मध्ये तार इन्फान्सी जो टर्मटी बा वाटी तार होई थाय जोटा कि शैशव अवस्था देखंतु इन दिस पीरियड द चाइल्ड अटेन्स ए हाइट ऑफ 20 इंच एंड ए बॉडी वेट बिटवीन 5 to 2 pounds देखंतु तार जो हाइट ता थाय हाइट तांगर 20 इंच बडी थाय आ बॉडी ता तांगर कोन 5 to 8 pounds होई थाय एट दिस स्टेज द चाइल्ड इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन अदर्स हिज डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑलमोस्ट एंटायरली अपॉन अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली तार जो रोची कंप्लीटली माने तार जो डिपेंडेंट होई थाय से शिशुटी कोन ना अन्य ऊपर निर्भरशील होई थाय फुली तांको फैमिली ऊपर पूरा निर्भरशील होई थाय एट दिस स्टेज चाइल्ड ग्रोज एट ए फास्टर रेट ए स्टेज रे कोन होय ना इन्फेंसी पीरियड रे चाइल्ड बहुत जल्दी ग्रो करि थाय फास्टर होय थाय तांकर जो ग्रोथ ही तांकर फास्टर होय थाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ टेक ए रैपिड मूवमेंट इन द फील्ड बिहेवियर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कोर्स ए जो पीरियड रे तांकर कोन होय थाय ना ऐसे बहुत रैपिडली मूवमेंट करि थांती एंड बिहेवियर तांकर स्मूथ फंक्शनिंग तांकर होई थाय देखंतु नेक्स्ट देखंतु चाइल्डहुड मोर स्कॉलर्स हैव यूज्ड द टर्म चाइल्डहुड फॉर द पीरियड एक्सटेंडिंग फ्रॉम 6 years to 12 years देखंतु तांकर जो चाइल्डहुड पीरियड तांकर हमर थाय से जो तार चाइल्डहुड पीरियड तार 6 रु 12 वर्ष मध्ये थाय सेही टाइम रे हम चाइल्डहुड बोली कहि दाउ इन दिस पीरियड द चाइल्ड कंटिन्यूज टू अंडरगो फिजिकल डेवलपमेंट बट अपार्ट फ्रॉम बॉडीली डेवलपमेंट द चाइल्ड आल्सो एक्सपीरियंसेस सोशल कल्चरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट देखो ए पीरियड रे पिलाटी कोन होय जाय ना शारीरिक तार डेवलपमेंट होय जाय आ ता सहित तार शारीरिक डेवलपमेंट सहित से बहुत एक्सपीरियंस करथाय जेंति सोशल क्षेत्र रे कल्चरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट मध्ये ताकर होय जाय देखंतु एडोलेसेंस पीरियड देखंतु एडोलेसेंस इज जनरली एक्सेप्टेड एज द पीरियड बिटवीन 13 years and 19 years देखंतु एडोलेसेंस पीरियड हमर कोन ना 13 year to 19 years थाय देखंतु वेस्टर्न साइंटिस्ट हैव आल्सो रिफर टू इट एज द टीन एज देखंतु देखंतु स्पेलिंग मिस्टेक है एटी जगह एफ है देखंतु टीन एज तो इट इज बिलीव्ड टू बी द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एटा कोन ना ए स्टेज ताकर जो होची बहुत कॉम्प्लेक्स पीरियड ताकर ए स्टेज कॉम्प्लेक्स ताकर कॉम्प्लेक्स जो डेवलपमेंट ताकर होय थाय देखंतु एटा कोन ना होची हमर विकास क्षेत्र रे एटा बहुत जटिल स्टेज थी नेक्स्ट देखंतु डेवलपमेंट प्रोसेस एंड फॉर्म्स देखंतु डेवलपमेंट रो प्रोसेस एंड फॉर्म्स देखंतु वी हैव जस्ट स्टेट दैट देयर आर वेरियस स्टेजेस इन द डेवलपमेंट of the child in which the child's person develops in numerous ways. The nature of the development process contains within itself physiological, mental, emotional and social elements. Hence development takes the following forms देखंतु point उडा देखंतु तंगर कोन ना physical growth development, mental growth and development, emotional growth and development, social growth and development, motor development, language development देखंतु एटी कोन कहै छै ना देखंतु एटी कोन कहै छै ना शिशुर जो विकास तांगर जो डेवलपमेंट होई थाय देखंतु तार बहुत गुडे पर्याय रहै विकास बहुत क्षेत्र रे जेपरि कि फिजिकल ग्रोथ रे रहै मेंटल ग्रोथ आ शारीरिक माने विकास तार ग्रोथ डेवलपमेंट इमोशनल ग्रोथ सोशल ग्रोथ मोटर डेवलपमेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट दे सब रहै छै देखंतु तार देखंतु हम चलो देखिबा फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखिबा चलो देखंतु एटी देछि कोन ना फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट मीनिंग ऑफ फिजिकल ग्रोथ देखंतु मीनिंग देखंतु फिजिकल ग्रोथ वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इट्स एबिलिटी टू ग्रो ए सीडिंग grows into a plant whose is course of time grows into a huge tree a child in due course turns into an adult in living organisms growth takes place by multiplication of the cell every living structure grows to a certain limit it cannot go on growing all the time through life देखंतु एटी देछि ना जीव जगत रे एक मुख्य गुण कोन ना एतरे वृद्धि हेबार क्षमता थाय देखंतु एक बिहन देखिबे एक उद्भिद रे बढी थाय जहा कि समय सहित एक विराट गछ रे परिणत होई थाय तबे कोन ना शिशुर बयस को होई जाय जीव जंतु मानकर जो कोषर ताकर गुणन द्वारा वृद्धि होई थाय आ प्रत्येक लिविंग क्षेत्र रे एटा गठन एक निर्दिष्ट सीमा पर्यंत बढी थाय एहा जीवन सारा सब बेले बढी पारिबो नाही तार लिमिट पीरियड थाय देखंतु infancy growth during infancy physical growth during infancy देखंतु infancy is the period of rapid growth and development मैं भी कहितली जे डेवलपमेंट जो हमरो infancy period ता बहुत rapidly growth करि थाय there is rapid growth in terms of height weight and size which leads to changes in shape and proportion देखंतु ताकर कोन height weight एवं size बहुत जल्दी ए टाइम रे डेवलप होई थाय ग्रो होई थाय physical growth is accompanied by motor activity तार motor activity जरा मध्ये होई थाय देखंतु general characteristics तार देखंतु infancy रो in the few first week देखंतु in the first few weeks of life the infant has no control over his body gradually he learns to lift up his chin when lying on his stomach द्वारा around 2 months जतबे से 2 months हो जाय he learn to smile a little से कोन कोन ना स्माइल करबा सिखे से टिके स्माइल करि थाय between 3 and 4 months his neck muscles grow stronger and he learns to hold his head up by now he has also started cooing and gargling and his salivary glands are active हो जाय थाय his eyesight becomes steady and when a dangling toy is tied to his crib he can fix his eyes on it and also turn his head to flow it if removed he can have a strong hold on any object near him but 6 months he can reach for it and grasp it by 6 months as found by Goshel a baby is able to sit with a slight support between 9 to 18 months से कोन करे ना देखंतु the child rapidly tears to creep देखंतु से कोन करे ना से तार जतबे से बसिबा स्टार्ट करि थाय टिके स्टैंड विथ सपोर्ट से सपोर्ट द्वारा का सहारा द्वारा माने ठिया भाबे चेष्टा करि थाय to climb stairs to walk and
is constantly moving about se kon kare na moving aguru undiba mai try karta hai climb stairs karta hai se dekhontu growth in height and weight dekhontu growth ta taro height and weight kshetra dekhontu and easily noticeable aspects of physical growth is changes in height and weight. Studies have shown that the birth infant is on an average 20 long and weight 7 pounds tangaro 20 inch body jaitanti infant period re male infant weight an average 0.2 pounds more than female infants taru male infant tankar pound 0.2 pounds more adhika thai. During the first 6 months the weight of an average infant is doubled hoitai. At the end of 2 years there is increase in arms and legs. He learns walk also dekhontu body proportion beside changes in height and weight growth in large muscles into tore katha dito tankar jo growth tankar jaldi jaldi gatisilo hoitai. tapre next dekhontu amaro dekhontu physical development during early childhood re physical development dekhontu child physical development during early childhood dekhontu एटी देइछ देखंतु according to हल्लक मतरे देखंतु this divided line is significant because as the child leaves the home environment and enters school new pressure and new expectation result in marked changes in patterns of behavior attitude and values देखंतु ए पीरियड रे तांकर जनरल नेचर ऑफ ग्रोथ देखंतु कोन रहउची. This period is marked by physical growth and motor development. एते देखो ना physical तांकर growth होइते और motor development होइते. Some of the bodily changes accompanying a growth are concrete and visible. किछि ना तांकर जो बॉडी रो किछि अंश तांको माने visible होइते concrete करते. The most important of this is increase in weight and height. The most important कोन ना तांकर जो increase होइते weight एवं height ऊपर तांकर increase होइते. At 5 years of age the average child will have gained about 9 inches in height from that of age 2. देखो जेते तांकर age 2 होई जाइताय तो से कोन करथन ना तांकर जो इंच होइते तांकर सेटा 2 इंच लेके 9 inches तांकर बॉडी जाइताय height देखो at 5 years of age देखो नेक्स्ट देखो ये तांकर मोटर डेवलपमेंट देखो पीरियड तांकर देयर इज अ लॉट ऑफ मोटर डेवलपमेंट एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन. दिस enables a child to perform various types of essential activity like walking, running, jumping, throwing etc. देखो तांकर जो ए जो मोटर डेवलपमेंट कोन हेते तांकर फिंगर गुडा मूविंग होइते से माने चालिबा स्टार्ट कर देतांती रनिंग करिबा जंपिंग करिबा आ फिंगिबा तो ए सब होती तांकर कोन ना मोटर डेवलपमेंट. द चाइल्ड pays instant attention to noise, sound, color and light. He begins to recognize faces and expresses the feelings of pleasure and pain through facial expression. से कोन करंती से तांकर एक्सप्रेशन करि पारंती pleasure and pain through facial expressions. नेक्स्ट देखंतु lymphatic system देखंतु another point worth nothing is the prominence of the lymphatic system during this period. This lymphatic glands are found in the region of the neck, underarms and various other parts of the body. देखंतु tonsil and adenoids are also made up of tymphoid tissues. Next देखंतु each child has his own tempo of growth. देखंतु it is important to note that each child has his own tempo of growth. Some children grow slower during the early years and faster later. Boys and girls grow at different rates. Boys और girl जो माने थांती से माने को different rates से तमानकर growth हेतै. It is found that 60% of the adult height is reached by girls at 3.5 years and by boys at 4.5 years. तांका boys पर 4.5 वर्ष रे होइतै अब जो मानकर 3.5 वर्ष रे होइतै. नेक्स्ट देखंतु physical development during later childhood. देखंतु later childhood हमर कोन ना 6 years to 12 years हम कहतली कांत लेवल हमर 6 रु 12 वर्ष पर्यंत आसी थाए. देखंतु एटी कोन दैछि ना later childhood refers to the period beginning with the child entrance to the primary school at the age of 6 or so. देखंतु ए पीरियड ता कोन आसी ना तांकर प्राइमरी स्कूल जिबा पे ए स्टेज तांकर आसी थाए जोटा कि कांत बाल्यावस्था. तो ए स्टेज तारे से माने प्राइमरी स्कूल जिबा आरंभ करि थांती देखंतु and ending with the appearance of physical changes at puberty. Thus the inter childhood period extend from 6 years of age to 12 years. इस स्टेज से केबे थाए ना 6 रु 12 वर्ष पर्यंत जो समय होता है हमर टाइम टेबल तो तार भीतर थाए हमर early later childhood. नेक्स्ट देखंतु the main characteristics of development during this stage as follows. देखंतु main character कोन रहउची यार ना देखंतु slow but steady growth. देखंतु नेक्स्ट रहउची motor development 3 point रहउची years of healthy growth. देखंतु फर्स्ट देखंतु slow but steady growth. देखंतु whereas the infancy and early childhood are the period of rapid growth and development, the stage of later childhood is characterized as the period of slow, steady and uniform growth. Development rate also uniform is very slow at this stage. Next point देखंतु motor development. In addition to this, muscles become stronger and the development of motor skills becomes more specific. The child gains better control over his muscles and there is a better coordination and integration in his motor activities. There is a marked increase in manipulation and speed and the child possesses greater strength and endurance. Next one देखंतु years of healthy growth. देखंतु these are the years of healthy growth. At the age of 9 or 10 children engage themselves in various types of outdoor games such as swimming and skating, hockey and cricket etc. The seeds of yearly peer group are sown. देखंतु ए पीरियड रे कोन होइतै ना 9 रु 10 वर्ष भितरे children engage themselves. children परस्पर भितरे engage होइतांती जेपरि फ्रेंडशिप होइतै तांकर आ से माने आउटडोर गेम खेले पसंद करतांती जेपरि स्विमिंग, स्केटिंग, हॉकी आ क्रिकेट ए भଳି. नेक्स्ट देखंतु एजुकेशनल implications of physical and motor development. देखंतु motor development रो एजुकेशनल implication देखंतु कोना देखंतु तांकर period of early childhood रो देखंतु rich and balanced diet. Early childhood being as the age of rapid growth and development, the children must be provided with a rich and balanced diet at this stage. Any deficiency of diet at this stage may have serious repercussions at the later stage and the growth of the child may be retarded. Next देखंतु next point कोना training is in good habits. The child must be trained in acquiring good habits of personal cleanliness and hygiene. Third देखंतु third point child to be gradually made independent. एतरे कोना child gradually independent
होई थांदी देखो कौन द चाइल्ड मस्ट बी एनकरेज टू डू मेनी ऑफ द रूटीन थिंग्स हिमसेल्फ फुल डिपेंडेंस ऑन द चाइल्ड मस्ट ग्रेजुअली गिव वे टू हिज इंडिपेंडेंस देखो नेक्स्ट देखो कौन रोची ना प्ले रोची प्ले इज द मोस्ट डोमिनेटिंग इंस्टिंक्ट एट दिस स्टेज इ स्टेज रे कौन होइथाय ना जो हमर अर्ली चाइल्डहुड तांकर खेलटा बहुत प्रिय होइथाय माने सब बेले बहुत खेलिया ପାଇଁ पसंद करंती आग्रह करंती इट इज एन इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ चाइल्ड्स लाइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड देयरफॉर प्ले एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग मैक्सिमम यूज ऑफ लिम्स शुड बी प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन टू फैसिलिटेट बेटर मोटर डेवलपमेंट नेक्स्ट देखो नेक्स्ट पॉइंट तांकर सेल्फ एक्सप्रेशन रोची सेल्फ एक्सप्रेशन कोन ना द चाइल्ड मस्ट बी अलाउड टू मूव अबाउट इन वाइडर स्फीयर सो दैट ही डेवलप्स इन द आर्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड कमांड ओवर द लैंग्वेज नेक्स्ट देखो तांकर पीरियड ऑफ लेटर चाइल्डहुड देखो लेटर चाइल्डहुड रे तांकर कोन होची ना फर्स्ट पॉइंट होची तांकर पेरेंट्स टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ फूड देखो तांकर पेरेंट्स कोन ना तांकर फूड ऊपर प्रॉपर केयर करिया को अछि प्रॉपर केयर करिया दरकार नेक्स्ट देखो फिजिकल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज तांकर फिजिकल प्रैक्टिकल एक्टिविटी ऊपर मध्ये ध्यान देबा उचित एम्फासिस शुड बी प्लेस्ड ऑन फिजिकल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज डिग्निटी ऑफ लेबर शुड आल्सो बी एम्फासाइज्ड नेक्स्ट पॉइंट देखो गुड एंड हेल्दी पॉइंट हैबिट्स देखो तांकर कोन ना शुड बी डेवलप्ड इन चिल्ड्रन द वेरियस ऑफ मॉडरेशन एंड डिसिप्लिन्ड लाइफ शुड बी इम्प्रेस्ड अपॉन चिल्ड्रन नेक्स्ट वन देखो सेल्फ एक्सप्रेशन द चिल्ड्रन मस्ट बी अलाउड द फुलेस्ट पॉसिबल सेल्फ एक्सप्रेशन थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ co-curricular activities games and sports should also be provided for their physical and social development next point देखो sympathetic atmosphere देखो sympathetic and affectionate type of atmosphere should be provided at home as well as in the school so that the child develops into a well balanced personality देखो नेक्स्ट देखिबा हम कोन ना cognitive development देखो cognitive development is an important aspect of growth cognitive development मानसिक हमर विकास देखो cognitive development is an important aspect of growth embracing the various mental development includes such abilities as attending perceiving observing remembering imagining thinking solving problems and growth of the intelligence as well as of language देखो एठी कोन कहि ना हमर जो मानसिक दक्षता से जो दक्षता को ग्रहण करी ज्ञानर विकास होछि कोन ना अभिवृद्धि एक गुरुत्वपूर्ण दिग आ कोन मानसिक विकास जोग देबा जेमति अनुभव करिबा पालन करिबा मन रखिबा कल्पना करिबा आ चिंता करिबा समस्या समाधान एवं बुद्धिर अभिवृद्धि तथा भाषा भଳି दक्षता कोन ना अंतर्भुक्त एरो मानसिक डेवलपमेंट रो नेक्स्ट देखो these abilities grow and mature with age in speed of general pattern of mental development each individual grows and mature with age देखो एठी कोन कहि ना ना ये जो दक्षता बयस सहित माने ग्रो होइताय बढ़िताय परिपक्व मध्ये होइताय मानसिक विकासर साधारण ढांचा कोन ना प्रत्येक व्यक्ति बढ़ी थांती ग्रो करी थांती बयस सहित परिपक्व मध्ये होइतांती तापर देखंतु कोन ना they are interdependent moreover the various mental abilities are interrelated and develop as a whole they are interdependent moreover mental development is a continuous process the factors that affect mental development include maturation learning and education mental development is a function of the nervous system especially of the brain ठीक अछि एरा कोन कहै छै ना विभिन्न मानसिक जो दक्षता धर अछि परस्पर संबंधी होई थांती आ समुदाय भाबरे तांकर सब मोसंगर डेवलप होई थाय से माने कोन ना निज भितर परस्पर ऊपर निर्भरशील होई थांती अधिक कोन ना मानसिक विकास एक निरंतर प्रक्रिया आ मानसिक जो विकास को प्रभावित करूतबा कारण गुडी कोन शिक्षा एवं शिक्षा अंतर्भुक्त करी मानसिक विकास स्नायु प्रणाली रो एक कार्य विशेष करी मस्तिष्क रो एक कार्य ब्रेन स्पेशली ऑफ द ब्रेन नेक्स्ट पॉइंट देखंतु स्टेजेस इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखंतु कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो स्टेज गुडी देखंतु फर्स्ट स्टेज कोन हमर अछि डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू 2 इयर जोटा कि हमर इन्फेंसी स्टेज देखंतु इन्फेंसी स्टेज रे हमर कोन अछि देखो टिके स्पेलिंग मिस्टेक है जे देखो द चाइल्ड इनहेरिट्स ऑल द सेंसरी इक्विपमेंट दैट इज नीडेड फॉर मेंटल एक्टिविटी द चाइल्ड शोज एविडेंस ऑफ हिज थिंकिंग एबिलिटी एट ए वेरी अर्ली एज देखो एट कोन कहै छै ना जो ज्ञान विकास जो जन्म 2 वर्ष पर्यंत जो जन्म 2 वर्ष पर्यंत तांकर जो डेवलपमेंट हेइ थाय जो शैशव अवस्था तांकर कोन हेइ थाय ना समस्त जो संवेदनशील यंत्र रो उत्तराधिकारी अटे जहा मानसिक सक्रिय पई आवश्यक होई थाय पिलाटी कोन हेइ थाय ना खूब शीघ्र तांकर चिंताधारा क्षमतार प्रमाण देखै थाय खूब जल्दी नेक्स्ट देखो फॉर एग्जांपल he tries to secure approval from his parents for the things he likes or does the child's curiosity is another characteristic of mental development at this stage he is curious to know about his immediate environment he also develops the ability to differentiate people and things around him देखो एठी कोन कहला ना देखो एठी कोन देछि ना उदाहरण स्वरूप देखंतु निज पसंद किबा करूतबा जिनिस पई पिता माता के अनुमोदन करबा चेष्टा करंती ए पजरे आ कोन हुए ना शिशुर कौतूहल मानसिक विकासर अन्य एक गुण अटे से तुरंत परिवेश विषय जानिया को करंती आग्रही होंती आ कोन करंती ना तांकर चारिपाखरे थिबा जो लोकन को एवं जिनिस को भिन्न परिवार क्षमता मध्ये विकास करंती ए होछि कोन ना द्रुत भाषा विकासर एक अवधि जहा शिशु अवधि व्यक्तिर क्षमता बढ़ाई थाए एवं आत्म अभिव्यक्ति मानसिक विकासर एक शक्तिशाली मानसिक देखो दिस पीरियड ऑफ रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट ए पीरियड तांकर लैंग्वेज भाषा रे बहुत रैपिडली तांकर डेवलप होई थाय व्हिच इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द चाइल्ड एंड सेल्फ एक्सप्रेशन इज ए पोटेंट मींस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट देखो the child also acquires a variety of sensory and recapitual experience and these experience contributes a lot towards his mental development देखो तांकर भाषा एक कौशल रे तांकर विकास होइतै नै इतरे कोन एक शक्तिशाली तांकर अभिव्यक्तिर मानसिक विकास रे एक शक्तिशाली माध्यम होइतै पिलाटी कोन करथै विभिन्न प्रकार संवेदनशील एवं अनुभव को अनुभूति मध्ये हासिल करबा को ये करितै अनुभूति गुडी को तांकर मानसिक विकास रे बहुत अवदान दैतै नेक्स्ट पॉइंट देखंतु
डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड देखो डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड आम जो पीरियड रोचे 3 ରୁ 6 इयर्स एग्जाम रे जदी 3 ରୁ 6 देई नथिबो 2 ରୁ 6 देइथिबो ताले मते ठीक हबो देखो द चाइल्ड बिगिन्स टू थिंक सिंबॉलिकली द perception of size color shape time and distance develops memory increases rapidly thinking and reasoning develops in relation to concrete material एठी देखो कोन कहिची जो बाल्यकाल विकास से कौन सांकेतिक भाग में चिंता करने आरंभ करती आउ कौन आकार रंग आकृति समय और दूरता धारण होता है विकसित होता है स्मृति कौन होता है स्मृति शक्ति द्रुत गति इनक्रीज होता है बढ़ी है जो सामग्री सहित जो रोचे विकास होता है कौन कंक्रीट मटेरियल सहित कौन होता है रिलेशन जो डेवलप होता है नेक्स्ट देखो डेवलपमेंट फ्रॉम 7 to 12 इयर्स लेटर चाइल्डहुड स्टेज देखो आम जो प्रांत बाल्यावस्था 7 to 12 इयर्स देखो This is a period of rapid mental development. The child acquires a new interest in studies and he takes pride in the increase of his knowledge. His sphere of interest is also widened and he likes to meet people, converse and discuss with them on various types of topics. This naturally leads to this further mental development. देखो ये कौन कहिछि ना तांकर जोडा हमर अछि जो 7 वर्ष जो हमर प्रांत बाल्यावस्था सेतरे कहिते ना तांकर जो मानसिक विकास द्रुत बेगर डेवलप होई जाय पिला अध्ययन रे एक नूतन आग्रह हासिल करंती आ कोन करती ना निजर ज्ञान वृद्धि रे कोन करंती परिगम्य होंती तांकर आग्रह क्षेत्र मध्ये विस्तारित होईछि एवं से लोकन को भेटिबा विभिन्न प्रकार विषय ऊपर सेमानकर सह आलोचना एवं आलोचना करबा को पसंद करंती या होछि तांकर कोन प्रभाविक गोटे स्वाभाविक भाव में परवर्ती मानसिक विकास को नहीं थाए तापर नेक्स्ट देखो डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस देखो तांकर एडोलेसेंस पीरियड रे तांकर देखो तांकर विकास फ्रॉम 12 to 18 years during this period the mental development reaches its climax the capacities and abilities such as observation perception attention memory thinking reasoning and intelligence are sharpened and increased leading to a high degree of mental development of the adolescent. This is also period of heightened imagination and therefore there is a great increase in the aesthetic sensibility of the pupils. Creativity in arts is also a dominant characteristic of this period. All this lends to a high degree of mental and intellectual development. देखो ई स्टेज रे कोन कहै छै एटा होछ तांकर युवावस्था एडोलेसेंस पीरियड तांकर 12 ରୁ 18 वर्ष पर्यंत जो अवस्था तांकर युवावस्था थाए देखो एई थरे कोन होइता ना एई तांको पर्याय मानसिक विकास जो होइता ना क्लाइमाक्स को संबोध करे दक्षता एवं जो दक्षता जेपरि कि जेमति तांकर पर्यवेक्षण धारणा ध्यान स्मृति चिंता युक्ति एवं वृद्धि होइता तीक्ष्ण होई जाय एवं वृद्धि पई किशोर मानसिक स्तर रे एक उच्च स्तर रे विकास करिथाय डेवलप करिथाय एटा मध्ये एक कोन ना उच्च कोटिर कल्पना रे एक अवधि होइताय तेनो से माने को करथि ना शिक्षार्थी मानकर सौंदर्यगत संवेदनशीलता रे बहुत वृद्धि घटिछि कला क्षेत्र रे देखो यह मध्ये एक उच्च कोटिर कल्पना रे एक अवधि मध्ये होइताय नेक्स्ट देखो social development देखो human beings are essentially social beings in modern life none has come to feel the necessity of human relationship more than ever before देखो एठी कोन कहछि ना सामाजिक विकास मनुष्य मुख्यतः सामाजिक प्राणी माध्यम जीवन रे मानव संपर्क आवश्यकता अनुभव करिया को आछि जेमति देखो पिला दिन पूर्व सामाजिकरण एक अवधि भाव में देखो सोशल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फिजियोलॉजिस्ट देखो सोशल डेवलपमेंट देखो अकॉर्डिंग टू द ए जो मनोविज्ञानी माने कहछन्ती तांको मतरे सोशल डेवलपमेंट कोन देखो फ्रांसिस देखो कोन कहछन्ती Francis F. Powell कहछन्ती social development can be defined as the progressive improvement through trajectory activity of the individual in the compression of the social heritage and the formation of flexibility conduct patterns of reasonable conformity with this heritage. In this sense, social development emphasizes the fact that growth must be progressive. देखो फ्रांसिस को मतरे कोन दिजन्ती देखो तांका मंदरे कोन सामाजिक विकास को निर्देशित जो कार्यकलाप माध्यम सामाजिक ऐतिह्यर बुझामणारे एवं एई ऐतिह्य सहित जुक्तियुक्त अनुकूलतार नमनीय आचरण ढांचा गठन र प्रगतिशील उन्नति भाव में व्याख्या करा जाय पारे एई अर्थ कहबा बोले सामाजिक विकास सत्य को गुरुत्व देथाय जे अभिवृद्धि होची प्रगतिशील हेबा आवश्यक नेक्स्ट देखो कहचंती सोरेनसन कहचंती देखंतु बाय सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वी मीन द इंक्रीज एबिलिटी टू गेट along with oneself and others. This means that a socially developed person has accepted tastes, attitudes and behavior patterns. Next देखंतु हल्ला कहचंती social development is the attaining of maturity in social relationship. Next देखो Garrett triggers कहचंती social development as the process whereby the biological individual is converted into a human person. 5 number देखो Freeman and Sobel कहचंती social development is the process of learning to conform to group standards more and traditions and becoming imbued with a sense of oneness, intercommunication and cooperation. देखो ये जो इन्फेंसी पीरियड सोशल डेवलपमेंट देखो इन्फेंसी देखो सोशल डेवलपमेंट देखो infancy period social development it is self evident that man is a social creature thus child falls under the influence of society through indirectly even before he is born से born पूर्व कोन होता है ना तांकर शिशु विकास दृष्टिकोण व्यक्ति जन्म हेबा परे समाज रे अनुपस्थिति रे तांकर अस्तित्व कोइता ना बजाय रहि पारे नेक्स्ट देखो तार कोन देखो प्रारंभ रे कोन होता है ना माता शिशुर समग्र समाज गठन करंती कारण कोन जीवन रो प्रथम 4 किबा 5 सप्ताह मध्ये रे तांको चेहरा जहा को से प्रायत देखंती प्रायत तांको फैमिली मेंबर को देखंती बेसिकली तांको मामा को बेसी देखंती तो धीरे धीरे चिन्हिबा को चिन्हंती 3 किबा 4 मास रे कोन करंती ना शिशुर जो सामाजिक प्रवृत्ति विकास हेबा को लागे 3-4 मास रे तांकर जो सामाजिक क्षेत्र रे तांकर डेवलपमेंट हुए तो कांदुतिले किबा हसुतिबा पिला अपरिचित व्यक्ति को देखिबा परे से चुप होई जाय आ 6 ରୁ 7 मास बयस रे पिला निज परिवार सदस्य मान को चिन्हिबा आरंभ करती से 6-7 मास गोटे शिशु निज फैमिली मेंबर को चिन्हिबा आरंभ करती जेते से 9 मास पर्यंत बसंती से शिखंती माँ कि किसी व्यक्ति सहित
ये करती जहाँ सहित से परिचित से सहित मिसती 2 वर्ष बयस से कौन करते निज बयसर अन्य पिला सहित खेलने शिखती जिते 3 वर्ष हो जाए से सामूहिक कि गोष्ठी कार्यकलाप में आग्रह प्रकाश करती एनवायरमेंट मिसती पिला सहित खेलती तो 6 वर्ष बयस पर्यंत से सामूहिक खेलगुड़िक भाग नेबा आरंभ करती नेक्स्ट वन देखो चाइल्डहुड सोशल डेवलपमेंट देखो द बिगिनिंग ऑफ चाइल्डहुड मार्क्स द फॉर्मल एंट्रेंस ऑफ द चाइल्ड इन सोशल लाइफ इट इज चाइल्डहुड दैट मूव्स आउट ऑफ द होम एंड गोes to school where he see many other children like himself it is here that he develops the tendency forward generationness towards forming groups and becoming a member of gangs देखो friendliness begins to manifest itself girls and boys prefer to play their separate game children now engage in many games outside the house and the competitive spirit who begin to emerge it has also been seen that it is in this stage that is a Oedipus and Electra complexes begin to develop देखो इस स्टेज कौन होता है ना देखो ये पर्यायर कोन 6 वर्ष बयस पर्यंत से सामूहिक जो खेल गुड़िक भाग ने आरंभ करती आ कोई ना ये पर्यायर बालक और बालिका मानकर सामाजिक विकास मध्य कौन पार्थक्य हुए ना झील मैंने डल सहित खेलुवा बेले पुआ मैंने क्रिकेट बॉल बैट सब खेलती तो पुआ मैंने क्रोध विरक्तिकर होती और असंतोष प्रकाश करने को पसंद करती तो पिला प्रायतः किसी क्षण गड़ागड़ी खेलती यही खेल गुड़िक नकारात्मक प्रवृत्तिर अभिवृद्धि परस्पर को नहीं था किंतु कौन हुए ना यहीपरि जे पूर्व पर्यायर तुलन में पिलाटी वर्तमान और तुम्हें धारणा मध्य भिन्नता आरंभ करने को मुझे तुम्हें धारणा मध्य भिन्नता आरंभ करने लगे तापर कौन हुए ना से अन्य पिला सहित परिचित होती निज सन्देह निजर किंतु से धीरे धीरे जानीपारी से जहाँ अन्यर अटे ताहा निसंदेह से व्यक्ति अटे जिते पिलाटी देखो सामाजिक विकास पिला दिन आरंभ हो जाए तो पिलादिन घर बाहर को जाए विद्यालय को जाती और निज अन्य अनेक पिला देखती तो से खेलती तो से गोष्ठी तैयारी करती जमी फ्रेंडशिप करती गोष्ठी गठन और गैंग सदस्य होगा दिगरे से ये करती बंधुता यार प्रकाश करने को आरंभ करे फ्रेंडशिप अधिक करती आ झील पुआ मैंने अलग खेल खेल पसंद करती जमी झील मैंने कंडे खेल पुआ मैंने बैडमिंटन बैट बॉल सब खेल पसंद करती पिला किंतु कौन करती ना खेल नियोजित होती जमी प्रतियोगितामूलक खेल बेसी खेलती तो ये सब होता है नेक्स्ट पॉइंट देखो कौन अच्छे नेक्स्ट पॉइंट अच्छे The Oedipus complex is the tendency of the child to love his mother much more. The name of this complex derives from the mythological character Oedipus who, with the help of his sister, murdered his father and married his own mother. It is for this reason that a child's love for his mother, especially when exagerated, is referred to as the Oedipus complex. देखो एटी कौन कह ना ओडिपस कम्प्लेक्स होची ना शिशुर माता को अति भल पाइबार प्रवृत्ति ए कम्प्लेक्स द्वारा चरित्र रु मिलि थाए जे कि तांको बोनर सहायले तांको पिता को ये करबा दही कारण एक शिशुर मां प्रति प्रेम विशेष कर जेते बेले अत्यधिक बढ़ी जाए तांको ओडिपस कम्प्लेक्स कुहा जाए नेक्स्ट पॉइंट देखो Similarly, the growth of the Electra complex in girls leads to their excessive love for their father. A girl named Electra killed her mother with the assistance of her brother and then married her own father. This is the reason why that his complex is known as the Electra complex. देखो से भाव में कौन ना झील मान इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स अभिवृद्धि से पालक मान अत्यधिक फैमिली प्रेम को नहीं था जन झील देखो इलेक्ट्रा नामक जन झील भाई साहय माँ को हत्या कला और निज पिता को विवाह कला यही कारण होती कम्प्लेक्स भाव में जनाशुना तो पिलादिन अन्यर देखो अन्य प्रति गभीर स्नेह रोचे जहाँ पिता माता प्रति अधिक दूर और खोलाखोली भाव में देखा जाए किंतु यह भाई भौणी मध्य था गभीर भल पाइबा सहित मिसिकी रहा सान भाई बड़ भौणी मान सहित भालुका दुर्ग निर्माण करवा खेलवा ये सब ये पीरियड था नेक्स्ट देखा एडोलेसेंस सोशल डेवलपमेंट देखो एडोलेसेंस सोशल डेवलपमेंट कौन रही Adolescence social development. In adolescence, the child's social development comes under the influence of his interest, needs, sense of security, of insecurity, etc. In this stage, adolescents are very sensitive towards their environment, but at the same time, the adolescent's social development is also profoundly influenced by his physical growth. We still disabled or handicapped adolescents tend to develop abnormalities and suffer from maladjustments. So children are usually shunned by other people and this intensifies their problems. देखो एडोलेसेंस रे कोन कोन युवावस्था रे ना सामाजिक विकास होता है संकर युवावस्था रे शिशुर सामाजिक विकास तांको आग्रह आवश्यकता प्रभाव को आसे जेमति कि सुरक्षा असुरक्षित इत्यादि एही पर्याय किशोर मानक सेमान परिवेश प्रति को होइते ना अत्यंत संवेदनशील होइतंती किंतु होइते ना किंतु समयर किशोर मानकर सामाजिक विकास मध्य तांको शारीरिक अभिवृद्धि द्वारा गभीर भाव में प्रभावित होइते जेमति दुर्बल अस्तुत अक्षम एवं भिन्नक्षम किशोर माने जेमति विकास करिया को लागंती देखो इन एडोलेसेंस द इंपोर्टेंट फीचर ऑफ सोशल डेवलपमेंट कैन बी आउटलाइन्ड एज फॉलोज देखो एटी कोन देछि देखो फर्स्ट देछि फर्स्ट पॉइंट देखो सिमिलरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स देखो एटी कोन देछि ना सामाजिक युवावस्था रे सामाजिक विकास रो गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य गुरिक देखिया देखो फर्स्ट देखो उद्देश्य रो देखो सिमिलरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव देखो सिमिलरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन एडोलेसेंस लीड्स टू द birth of him and permanent friendship. However, in forming friendship, adolescents keep in mind interest, aptitudes, and social and economic status. There is not much significance in proximity of residence. देखो एटी कोन कहछि ना जो तांकर युवावस्था रे जो समानतार उद्देश्य थाए लक्ष्यर समानता दृढ़ और स्थायी बंधुत्वर जन्म नहीं थाए आ कोन होता ना सामाजिक और तांकर जो अर्थनैतिक स्थिति तांकर डेवलप होता है वासस्थान निकट रे अधिक तांकर महत्व न थाए नेक्स्ट देखो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी देखो सामाजिक ग्रहणीयता देखो कोन देछि ना
Adolescents become aware of the fact that they have social acceptability at some places but not of others. They come to feel that their parents do not make an effort to understand them or to give them adequate independence, especially in decision making. देखो ये पीरियड कोन होइते ना तांकर किशोर माने या जानि परंती जे सेमानकर केतेक स्थान रे सामाजिक ग्रहणीयता अछि किंतु अन्य मानक तुलना रे नुहे सेमाने अनुभव करंती जे सेमानकर पितामाता सेमानकु बुझेबा पई किबा सेमानकु पर्याप्त स्वाधीनता देबा पई प्रयास करंती नाही, विशेष करी निष्पत्ति नेबारे। नेक्स्ट पॉइंट देखंतु कोन अछि। नेक्स्ट पॉइंट देखंतु social ability देखो social ability देखो develop to such an extent in adolescents that they are usually eager to make sacrifices for the honor and dignity of their friends of their groups. For this purpose they obey every command given by the leader of the group। देखो एतरे कोन कहछि थर्ड पॉइंट रे ना सामाजिकता देखो कोन दैछि किशोर मानक मध्य सामाजिकता एते परिमाण रे विकसित होई जे सेमाने साधारणतः सेमानकर सम्मान एवं ओ सम्मान पई बलिदान देबाक आग्रही होई जंती आ संग सेमानकर संग मान सहित गोष्ठी करथि। एई उद्देश्य पई सेमाने दलर नेतांक द्वारा दिया जाउता प्रत्येक आदेश को मानि थांती। नेक्स्ट देखो maturity. The social development of girls is marked by greater maturity. However, they take greater interest in talking about boys or reading books about them। देखो इतरे कोन कहै छै परिपक्वता देखो झियो मानकर सामाजिक विकास अधिक परिपक्वता द्वारा चिन्हित होइतै आ बालक मानक विषय रे कथाबार्ता करबाकू किबा से मानक विषय रे पुस्तक पढियाकू अधिक आग्रह देखाई थांती। देखो 4 पॉइंट देखो social awareness। Social awareness कोन देखो social awareness grows at the rapid pace in adolescence. The adolescent was to win praise from his parents as well as acquaintance. He easily become annoyed and insists upon the fulfillment of his wish. His behavior is characterized by selfishness। देखो एतरे कोन कहै छै ना सामाजिक सचेतना रे किशोर मानक मध्य सामाजिक सचेतना द्रुत गति रे बढ़ी थाए। किशोर निज पितामाता एवं परिवार मानक ठारू प्रशंसा पाइबाकू चाहंती आ से सहज रे विरक्त होई जानती, जल्दी माने इरिटेट होई जानती, निज इच्छा पूर्ण करबाकू जिद करंती। ताको आचरण स्वार्थपर द्वारा बनित माने सत्तांग जो बिहेवियर तांकर एटा स्वार्थपर टाइप होई जाय। नेक्स्ट पॉइंट देखंतु इमोशनल डेवलपमेंट कोन देखंतु during the process of growth and development every individual undergoes distinct emotional expressions specific to that particular stage of development. In every activity that we perform we have an emotional experience which is reflected in our mood. Emotions, which are said to be the spring of lifetime actions, occupy a special field of study for a student of student education and physiology and bear special significance for a teacher। एठी कोन दैछि ना इमोशनल विकास जो हमरो रहउछि तो अभिवृद्धि और विकास प्रक्रिया समय प्रत्येक व्यक्ति विकासर से निर्दिष्ट पर्याय निर्दिष्ट भावप्रवण अनुभूति होती। आम कहूबा जमी प्रत्येक कार्यकलाप आमर एक भावप्रवण अनुभूति अच्छी जहाँ आम मनोबलर प्रतिफलित होता है। भावना जहाँ जीवन समय कार्यर ऋण बोली कहुए। शिक्षा और मनोविज्ञान छात्र एक विशेष क्षेत्र अध्ययन करें और जन शिक्षक विशेष कर महत्व बहन करें। भावप्रवणतार देखो चलो देखा नेचर ऑफ इमोशन देखो नेचर ऑफ emotions देखो on the basis of our daily experience emotion is a complex mental process followed by a well marked feeling tone. In this sense emotions are a complex feeling, however it will not be out of place to midlist a few expert definitions of emotion. Emotions is defined as देखो defined आमे करे देखिया देखो एबे नेचर देखो देखो नेचर ऑफ इमोशन रे कोन कह ना जो हमर भाव प्रवणतार प्रकृति अछि दैनंदिन अभिज्ञता आधार एक भावना होछि कोन जटिल मानसिक प्रक्रिया जहाँ एक चिन्हित अनुभव स्वर द्वारा रंगित होइते। ई अर्थरे भावना एक जटिल अनुभव करे तथापि कोन ना भाव प्रवणतार किछि विशेषज्ञ संज्ञा मध्य करबाकू यह स्थान बाहर रहिबा निहाती आवश्यक। नेक्स्ट देखंतु इमोशन इज डिफाइंड एज देखंतु फर्स्ट पॉइंट देखंतु derivative meaning. In its derivative meaning emotion may be defined as the state of or the excited or the disturbed state of mind. The word emotion is itself derived from the Latin word evoke which means to stir up, to excite or the agitate। देखो इतने फास्ट पॉइंट कोन कह जाय ना हमर जो भाव प्रवणता जो अच्छी देखो यार उत्पत्ति अत्र भावना को माने स्टिर अप एवं उत्तेजित कि मनर विचलित अवस्था भाव व्याख्या होते आ कोन ना भाव प्रवणता शब्दटी निजे लैटिन शब्द तार आछि इम्भोर उत्पन्न होइछि जार अर्थ होइछि उत्तेजित करिवा पई उत्तेजित। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो गेट्स डिफाइन्स इमोशंस एज एपिसोड्स इन व्हिच द इंडिविजुअल इज मूव्ड और एक्साइटेड। देखो 2 पॉइंट रे देखो देखि जे गेट्स कहचंदी भावना को कहचंदी जेउथिरे एपिसोड जेउथिरे व्यक्ति घुंची जाय किबा उत्साहित हुए भावरा व्याख्या करे। थर्ड पॉइंट देखो वुड डिफाइन्स इमोशन इज ए मूव्ड और स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इट इज डिस्टर्ब्ड मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर एक्टिविटीज। एतरे कोन कहै छी ना काटपाट व्याख्या करचंदी द इमोशन हेउची एक जीवंकर एक गतिशील बा उत्तेजित अवस्था यह मांसपेशी एवं ग्रंथि कार्यकलाप को विचलित करे। नेक्स्ट देखंतु जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशंस।
देखो कौन चेक जाइए ना देखो फास्ट पॉइंट देखो एवरी इमोशन इज फॉलोड बाय फिजियोलॉजिकल चेंज सच एज रैपिड हार्टबीट चेंज इन द पल्स रेट चेंज इन ब्लड प्रेशर चेंज इन द फेशियल एक्सप्रेशन वॉइस एंड बॉडी मूवमेंट देखो जो प्रत्येक भावना शरीर परिवर्तन द्वारा कौन होता है अनुसरण कर जपरिक द्रुत उत्पादन जो हार्टबीट द्रुत स्पीड होता है नाड़ी हार में परिवर्तन होता है रक्तचाप परिवर्तन मुखर अभिभूति स्वर और शरीर गतिविधि परिवर्तन होता है नेक्स्ट पॉइंट देखो इमोशन इज अकम्पेनाइड बाय ए फीलिंग ऑफ प्लीजेंटनेस एंड अनप्लीजेंटनेस फॉलोइंग फिजियोलॉजिकली चेंजेस देखो सेकंड पॉइंट कोन देछि ना भावना गुड़ी कौन ना सब्जेक्ट निर्दिष्ट व्यक्तिगत अटे समान परिस्थिति विभिन्न व्यक्ति विशेषज्ञ मध्य कही था भिन्न भावना सृष्टि करे इमोशन होती त्रिपाठी प्रतिक्रिया भाव में प्रभावशाली देखो नेक्स्ट वन देखो इमोशन आर सब्जेक्टिव एंड प्योरली इंडिविजुअल द सेम सिचुएशन में इवोक डिफरेंट इमोशंस इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स 4 पॉइंट देखो इमोशन इज ए ट्रिपुलर रेस्पॉन्स हैविंग इफेक्टिव कॉग्निटिव एंड कनेक्टिंग एसेट्स देखो 5 पॉइंट देखो इमोशंस हैव वाइड रेंज एंड आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर एज पीरियड देखो एटी कौन कही दे अकर टू चिल्ड्रेन एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स देखो एथरे कौन कही ना भावना गुड़िकर जो व्यापकता अच्छी आ एक निर्दिष्ट जुगरे सीमित नुहे से पिला किशोर पिला वयस्क मान सहित घटे नेक्स्ट पॉइंट देखो Emotions rise abruptly. The passing away of the emotion is, however, slow, leaving behind an emotional state which lasts for some time. देखो एथरे कौन कही ना भावना हठात बढ़ी जाए भाव प्रवणतार परलोक धीर और एक भाव प्रवण अवस्था को छाड़ी दिए जहाँकि किसी समय पर्यंत रही थाए नेक्स्ट पॉइंट देखो इमोशंस हैव स्विंग्स वन इमोशंस मे गिव राइज टू अनदर इमोशन हैव द टू मे गेट मर्ज्ड देखो एथरे कौन कही ना भाव प्रवणता थाए गोटे भावना बढ़ी पारे अन्य भावना को एवं दुई जन मिश्रित होई पारंती 8 पॉइंट देखो an emotion mostly rises when the organism faces a difficult situation or when the basic needs is challenged or is not satisfied देखो ए पॉइंट कौन कह जाइए ना से एक भावना बढ़े जो एक परिस्थिति वास्तव कि कल्पना सर्वदा एक भावना सहित संयुक्त होता है पिला भावना वयस्क मान प्राकृतिक और दीर्घस्थायी नुहे से भावना हठात और तीव्र उत्तेजना द्वारा वर्णित क्षणस्थायी अधिक बारंबार और सहज प्रकाश कर नेक्स्ट देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड इमोशनल देखो चाइल्डहुड देखो इमोशनलिटी देखो हॉल क्वेश्चन देखो इन हर बुक चाइल्ड डेवलपमेंट हैज ब्यूटीफुल लिस्टेड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड इमोशनलिटी व्हिच डिस्टिंग्विश द इमोशंस ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम दोज ऑफ एडल्ट्स देखो एथरे कोन कहिछि ना जो पिलादिनर जो भाव प्रवणतार सामाजिकरण देखो तांका पुस्तक कोन कहिछि शिशु विकास रे हॉल कहिसंती जे भाव प्रवणतार सुंदर भाव तालिकाभुक्त करिसंती देखो पिला मानकर भावना को वयस्क मानक ठारू भिन्न करि थाए देखो ए नंबर देखो चिल्ड्रन्स इमोशंस आर ब्रीफ यंग चाइल्ड इमोशंस लास्ट ओनली ए फ्यू मिनिट्स एंड देन एंड abruptly by expressing her emotion he simply clears his system and as a result the emotion lasts for a relative short time देखो एथरे कोन कह जाय छै ना पिला मानकर जो भाव प्रवणतार जो संक्षिप्त छोट शिशुर भावना केवल किछि मिनिट रही है और तापर हठात शेष हुए तार भावना को कौन करते ना प्रकाश करी से केवल निज सिस्टम को सफा करती और फलस्वरूप भावना अपेक्षाकृत स्वल्प समय पर्यंत रही है जो रही है आवेग जोटा कि कहते इमोशनल तो से जो आवेग क्षण थाए बेसी न था शॉर्ट टाइम थाए नेक्स्ट पॉइंट देखो चिल्ड्रन्स इमोशंस आर इंटेंस यंग चाइल्ड इमोशंस आर मार्क्ड बाय इंटेंसिटी व्हिच इज सेल्डम ऑब्जर्व्ड इन द इमोशनल रिएक्शंस ऑफ एन एडल्ट देयर आर नो ग्रेडेशन इन द इमोशनल रेस्पॉन्स ऑफ ए चाइल्ड देखो एथरे कोन कह जाय ना पिला मानकर जो भावना ताकर तीव्र आ छोट तीव्र छोट शिशुर भावना तीव्रता द्वारा चिन्हित होता है जहाँ वयस्क भाव प्रवणता क्वचित देखा जाए शिशुर भाव प्रवणता प्रतिक्रिया कौन ना कौन ग्रेडेशन न थाए यार अर्थ होना ना भाव प्रवणता प्रतिक्रिया परिवर्तन नेक्स्ट वन देखो चिल्ड्रन्स इमोशंस आर ट्रांजिटोरी बाय ट्रांजिटोरी वी मीन शिफ्टिंग एंड देयर इज शिफ्टिंग ऑफ इमोशंस फ्रॉम टीयर्स टू स्माइल्स फ्रॉम जेलोसी टू अफेक्शन इट आल्सो मीन्स चेंज इन इमोशनल रिएक्शंस देखो एथरे कोन कह जाय ना वयस्क भाव प्रवणता क्वचित देखा जाए और पिला मध्य अधिक देखा जाए नेक्स्ट वन देखो चिल्ड्रन इमोशंस अपीयर फ्रिक्वेंटली देखो पिला मानकर जो भावना माने बारंबार देखा जाए वयस्क तुलन में पिला मानकर भावना बारंबार देखा जाए थाए देखो चिल्ड्रन इमोशन अपीयर फ्रिक्वेंटली चिल्ड्रन्स इमोशंस अपीयर मोर sorry next देखो चिल्ड्रन्स इमोशंस एक्सप्रेस आर डिफरेंट देयर इज ए होल वेरिएबिलिटी इन द इमोशनल रेस्पॉन्सेस ऑफ चिल्ड्रन एन एग्जांपल विल इलुस्ट्रेट दिस वन चाइल्ड इन फियर विल रन आउट ऑफ रूम अनदर मे हाइड बिहाइंड हिज मदर्स हार्ट एंड सो ऑन देखो एथरे कोन कह जाय ना पिला मानकर जो भावना से बारंबार देते आ सेटा कोन ना वयस्क तुलन में पिला मानकर भावना बारंबार देखा जाए कारण होजे ना पिलाटी बड़ होबा सहित से परिस्थिति संशोधन करिवो एवं क्षमता रखि थाए यथार्थ भाव में कहले भाव प्रवणता को डाके नेक्स्ट वन देखो children express their emotions directly or as they feel them whereas in adults the responses are indirect and they know how to hide their emotions तो से माने सेटा सिखि जानते जे निज इमोशन टा को केमति से लुचेबे तो हाइड कर दियंती आ से मान को आगे एक्सप्रेस करि थांती तो जो मान को से ट्रस्ट करि थांती देखो इमोशनल डेवलपमेंट इन वेरियस स्टेज देखो इन्फेंसी देखो 0 to 2 years देखो infancy tradition is of the view that the infant is poorly endowed emotionally however the baby exhibits much behavior that seems to have an emotional quality as and when he traces his limbs on the whole early in this stage emotions if at all the exist they exist in undifferentiated and diffuse form they develop as a result of maturation and training in the first year there is only one emotional response and that is the general excitement as the baby grows the emotional responses become less diffused and can be distinguished देखो एथरे कोन कह जाय छै ना
शिशु जो गैरिसन दृष्टिकोण गैरिसन मत शिशुटी भावप्रवण भाव ये थाए भावप्रवण भाव तथापि कौन शिशुर आचरण प्रदर्शन करे जहाँ एक भावप्रवणर गुण थी देखा जाए जिते से अंग को फोपाड़ी थाए जो मोट पर पर्याय आरंभ भावना जब से विद्यमान थाए कौन करती ना अभिव्यक्त और विस्तारित रूप में विद्यमान करते परिपक्वता और प्रशिक्षण परिणाम स्वरूप से विकास करती प्रथम वर्ष में गोटे भावप्रवण प्रतिक्रिया अच्छी और कौन ना साधारण उत्साह शिशुटी बढ़ुवा सहित भावप्रवण प्रतिक्रिया गुड़िक कम विस्तार हो जाए और पृथक कर प्रमाण दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखो early childhood 2 to 6 years it is at this age that the emotions begin to show themselves up in differentiate from the two streams of emotions such as emotions such as anger and fear and the pleasant integrative emotions will again provide a framework for discussion. Maturation continues to play its part. If a child is not handled properly, he will develop into an emotionally immature person. The chief characteristic of emotions in early childhood is that the emotions are spontaneously and the child cannot control them till he reaches later childhood. देखो एथरे कोन कहै छै ना जो यही बयस कौन करती ना भावना निजक भिन्न रूप में देखा आरंभ करती भाव प्रवणतार दुईटी स्रोत फ्रन उत्साह और प्रीतिकर और व्याघातकारी भाव में जपरिक क्रोध और भय को भिन्नकर होता है सुखद एकीकृत भावना पुनर्बार आलोचना एक फ्रेमवर्क प्रदान परिपक्वता यार भूमिका ग्रहण कर लगी देखो पिला सठिक भाव में नियंत्रण कराए जहाँ एक भावप्रवण और परिपक्व व्यक्ति भाव में विकसित हे बाल्यकाल भावप्रवणतार मुख्य गुण होची कोन ना भावना स्वतः प्रभुत्व और परवर्ती पिलादिन पर्यंत पिला से नियंत्रण कर भावप्रवणतार अधिक अभिव्यक्ति कौन होती ह्रास घटी बाल्यकाल सर्वदा उच्चतर भावप्रवणतार समय अटे शिशुर भावना कही ना तीव्र होते से प्रायतः क्रोधित होती पिलादिनर पिलामानकर साधारण भावना होची भय क्रोध ईर्षा। Later childhood, 6 to 12 years, this is the period of stability and control. The emotional expression are restrained and very soon the child learns that violent expression of emotions is not acceptable and it is babies to express the emotions very time but it in any way does not mean that the emotional life of the child is not rich. He has pleasant emotions too and expresses them. He loves and enjoys being loved with. Although there is increased differentiation of emotional expression, there is one gradual discipline in the exhibition of overt expressions. देखो एथरे कोन कहै छै ना परवर्ती जो बाल्यावस्था मोर 6 ରୁ 12 वर्ष यह होची कोन ना स्थिरता एवं नियंत्रणर समय भाव प्रवणता को संयम करा जाय एवं खूब शीघ्र पिला शिखिले से भाव प्रवणतार हिंसात्मक अभिव्यक्ति ग्रहणीय होई नथाय एवं प्रत्येक थर कहै छै ना निज भावना को प्रकाश करबा शिशु ये होता है कौन प्रकार यार नुहे शिशु भावप्रवण जीवन ये होता है देखो से भावना इच्छा प्रकाश करने शक्ति आरंभ हुए कौन होता है ना आम भावुँ यह ये देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ एन एडोलेसेंट देयर इज ए टाइड व्हिच बिगिन्स टू राइज इन द वेनिस of youth and the age of 11th or 12th. It is called by the name of adolescence. If this tide can be taken at the float where it begins in the strength and along the flow of its current, we think that it will move to fortune. देखो एथरे कोन कहै छै ना according to Hardo report of England, adolescence is an interesting period to the teacher and an exciting period between late childhood and adulthood. It is called the spring of life. It is attractive but an event, insecure and strange path of childhood to maturity. It is the period when growth takes place in all aspects of life: physical, mental, social, moral and emotional aspects. देखो emotional maturity देखो emotional implication of emotional development. Teachers' role in emotional training. Emotions and feelings are the prime movers of human activity. They are connected with the specific modes of activity important. The development of the individual and his relationship with the socio-emotions are the mainspring of human behavior and have therefore their importance in the theory of practice of education. Retribution of our set through James are developed by the proper emotion training of the young growing child, often called the little Severus, in highly desirable to fit him to hold a place in the civilized society. देखो एटा कोन कहै छै ना देखो भावप्रवणता प्रशिक्षण जो शिक्षक भूमिका भावना होची मानविक सक्रियतार मुख्य चालक से कहते हैं व्यक्तिगत कार्यकलापर निर्दिष्ट मोड सहित जड़ित अटंती व्यक्तिर विकास डेवलपमेंट और समाज भावना सहित संपर्क थाए मानव आचरणर मुख्य होची सिद्धांत होची कोन ना शक्ति कहते प्रोफेसर यादव कहते आवेग द्वारा विकसित होची युवक बढ़ुवा शिशु सठिक भावप्रवणता सभ्य समाज में स्थान पाइबा फिट करबा अत्यंत आवश्यकता रही। नेक्स्ट देखो इमोशंस कैन बी ट्रेन्ड बाय द फॉलोइंग मेथड देखो सब्लिमेशन that is giving a free outlet to emotions, reflection, mental occupation, that is making the child do something, co-curricular activities, creating healthy environment, inhibition and repression, punishment if needed. देखो एथरे कोन देउछि ना नकर पूर्ण निर्देश मानसिक वृत्ति या पिला किछि करिबा पई सुजोग पाठ्यक्रमर कार्यकलाप सुस्थ रहिबा पई दंड जदि आवश्यक हुए दंड दिया जिवो तो यह एमटी दे जाइतला। नेक्स्ट पॉइंट देखो टीचर्स पर्सनल इमोशनल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपोर्टेंट एग्जांपल इन बेटर दैट पर्सपेक्ट ए टीचर हु डज नॉट fall into the pit of anger no loses temperament is sure to leave a impression on his pupils. The teacher is likely to be caught in a number of tense situations inside the classroom or the playground. देखो एथरे कोन कहै छै ना शिक्षक जो विचार सहित भाव प्रवणतार अत्यंत आमदानी होची तो कोन एग्जांपल होची कोन ना अपेक्षा उत्तम होची निश्चित भाव में जो पीपल ऊपर एक छाप ये कर दबा
तो सेटा होची तांगर क्लासरूम द प्लेग्राउंड तांगर जो प्लेग्राउंड होची क्लासरूम रो सिचुएशन इनसाइड क्लासरूम भीतर तांगर सिचुएशन था नेक्स्ट पॉइंट देखंतु unnecessary frequently punishment should be avoided he should avoid such remarks as would hurt the child's ego he should own the students and respect his personality देखंतु नेक्स्ट पॉइंट देखि दियंतु congenial atmosphere is necessary for the emotional health of students. Teachers should behave themselves in their interpersonal relationship. The school atmosphere should give the pupils a sense of belongingness and a feeling of security. Next point देखंतु opportunity for self-expression are helpful in creating emotional stability. Proper literal facilities, provision for game and sports, organization of debates, declamations, dramatic, etc. are the number of activities which the teacher can arrange in the school for giving an outlet. देखो ये कोन भाव प्रणाली जो स्थिरता सृष्टि करियार जो आत्म अभिव्यक्तिर कोन सुजोग सहायक होइते कोन साहित्यर सुविधा खेल एवं क्रीडा व्यवस्था वितर्कर संगठन घोषणानामा नाटक इत्यादि नेक्स्ट वन देखंतु देखंतु मोरल डेवलपमेंट देखंतु देखंतु द वर्ड मोरल एंड ऑल इट्स डेरिवेशंस कम फ्रॉम द लाटिन टर्म मोस व्हिच मीन्स मैनर कस्टम एंड हैबिट देखो मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास डेवलपमेंट नैतिक विकास देखो ये कौन ना सकारात्मक जो पदक्षेप ग्रहण कर पारिया नैतिक शब्द और यार समस्त उत्पत्ति कोन ना लैटिन टर्म जो मोस रो आसी हमर नैतिक विकास नैतिक जहार अर्थ होची कोन ना पद्धति प्रथा एवं अभ्यास नेक्स्ट देखो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स न्यू इंटरनेशनल सॉरी इट इज स्पेलिंग मिस्टेक है न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी मोरल refers to the fixed customs or folk ways imbued with an ethical significance देखो ये कौन कहिछि ना जो तांको मतरे देखो नैतिक शब्द व्यक्तिर गुणगुड़िकर एक सिस्टम को बुझाए रिफर करे जहाँ व्यक्तिर कोन अभ्यंतर जो प्रकृति सहित सेटा सुसंगत और समाज द्वारा अनुवादित मूल्यबोध अनुଯାयी होता है नेक्स्ट वन देखो स्टेज ऑफ इन्फेंसी 0 to 3 years देखो the child's first and probably the most impressive experience with right and wrong good and bad is in toilet trainings as children develop through infancy they are able to make an increasing number of choices and they start tolerating increasing restrictions the time they are 2 years of age they may show apparent feeling of guilt at 3 plus the mere thought of a proven act may cause guilt feeling देखो नेक्स्ट देखो कोन इयरली चाइल्डहुड देखो 38 देखो इयरली चाइल्डहुड जो 3 to 6 years समर होची डिटेल स्पेलिंग मिस्टेक है 38 है the children at this stage think of good and bad only in terms of specific acts approved or disapproved by parents the ideals of good and bad take steps in obeying elders helping co-fellows in mutual give and take children want to feel that they have done what is right wrong actions leave them worried and unhappy नेक्स्ट वन देखो लेट चाइल्डहुड हमर रोची 6 to 12 years इट इज स्पेलिंग मिस्टेक अछि एट द स्टेज ऑफ हिज डेवलपमेंट द चाइल्ड कैन बी स्टमेटेड ग्रोथ इन हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेशन ऑफ राइट्स एंड रॉन्ग ही डेवलप्स टॉलरेंस ऑनेस्टी एंड जस्टिस देखो एथि भी मतलब को जाई छी सेम कथा देखो adolescence is the crucial period in the life of an individual at this stage the adolescent is expected to replace the specific moral concepts of childhood with general moral principles each moral behavior is the result of internal control rather than of external imposition as a child he accepted the concepts of rights and wrong as purchased by his parents or elders around him without questioning next देखो the following are important aspects of the moral development in an adolescence देखो तांकर फर्स्ट पॉइंट होची कोन ना डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियस सेकंड पॉइंट कोन ना सेटिंग ऑफ हायर मोरल स्टैंडर्ड्स थर्ड पॉइंट कोन ना नीड ऑफ डिसिप्लिन फोर्थ पॉइंट कोन ना सेट्स ऑफ मोरल बिहेवियर्स नेक्स्ट देखो एठी देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग मोरल डेवलपमेंट तार पॉइंट रोची फैमिली रोची स्कूल रोची फ्री ग्रुप रोची तांकर सोसाइटी एंड कल्चरल रोची देन रोची एज रोची देखो फर्स्ट देखो कोन हमर देखो फैमिली प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल इन ए चाइल्ड मोरल डेवलपमेंट बहुत गुड इंपोर्टेंट पार्ट रोची निज फैमिली हिज फैमिली इनिशिएशन इनटू द माइटरीज ऑफ द गुड एंड द बैड इज थ्रू हिज पेरेंट्स एक्सेप्टेंस ऑफ रिजेक्शंस ऑफ हिज वेरियस एक्शंस नेक्स्ट देखो स्कूल रोची टू प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग मोरल कॉन्सेप्ट्स द चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नोशंस ऑफ द गुड एंड द बैड एज द रिजल्ट ऑफ हिज रिलेशनशिप विथ हिज classmates and teachers and senior students next देखो तांकर जो peer group रोची children are always in search of suitable companion for play क्रिया तांकर सहित से जात जो मिस करंती से मन सहित करंती they are influenced by the notion of good and bad that prevail among his chosen companies fourth point देखो society and culture देखो the general social atmosphere also affected the moral development of the individual it is this reason why the moral behavior of individual belonging to cultural society is marked different from that of individuals belonging to uncivilized society is देखो age is an important factor in forming moral concept and moral behaviors as the individual process from infancy to adolescence he becomes more tolerant towards certain those ideals which sometimes do not totally with what is think to good देखो next देखो तांकर language development पळासला देखो in the opinion of Charles C Garrison the language that a child has acquired
before going to school is the best criterion of his mental development. The development of linguistic ability also takes place according to the principal characteristic other aspect of development. देखो तो infancy period रे कहिछि ना language development at the moment of birth the child usually lets out a cry and this is the finest sound it makes this life. At this time the child knows neither consonants nor vowels up to the age of 25 months. The various sounds produced by the child are dominated by vowels. At the age of 10 months the child usually speaks his first word and then repeat it very frequently. In the first year it is quite difficult to understand the child's language and it has to be interpreted by inference. देखो तांकर प्रोग्रेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट देखो तांकर एज तांकर देखो फ्रॉम बर्थ टू 8 मंथ जन्म 8 मास भितर से माने किछि भी कहंतिनी. नेक्स्ट देखो 10 मास परे से माने गोटे वर्ड कहंती. नेक्स्ट देखो 1 ईयर रे 3टी वर्ड 1 ईयर और 13 मास रे 19टी वर्ड कहि पारंती. 3 मास 3.5 वर्ष परे तो से माने कोन करंती 22 सॉरी 3.5 मंथ 3 मास परे 3.5 मंथ आरो 6 मास भितर से माने 22टी कहंती. आ कोन ना 1 ईयर टू 9 मंथ्स कोन करंती से माने 118टी कहि पारंती वर्ड. 2 ईयर से माने 262टी शब्द कहि पारंती. 4 वर्ष रे से माने 1550टी. 5 वर्ष रे से माने 2062टी वर्ड कहि पारंती. 6 ईयर रे से माने 2562टी वर्ड कहि पारंती. नेक्स्ट देखंतु चाइल्डहुड लैंग्वेज डेवलपमेंट देखंतु चिल्ड्रन अंडरगो देखो चाइल्डहुड लैंग्वेज डेवलपमेंट देखो चिल्ड्रन अंडरगो an increase in their rate of learning as they grow older and thus the time span for every activity become gradually less and less. In childhood the child learns everything from single word to construction of sentence. मैंने sentence भी कह सकी जानती. ए पीरियड रे the elder brother conclude from their studies that देखो पॉइंट देखो linguistic development is faster in the case of girls than that boy. girls मानकर बेसी बढ़ी जाय तांकर लैंग्वेज रे तो boy मानकर अपेक्षा that girls construct longer sentence than boys do. देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो that girls are more skilled in expressing their thoughts cognitively. नेक्स्ट देखो लैंग्वेज डेवलप अकॉर्डिंग टू सीजन देखो से माने केते कहि पारंती. देखो 4 ईयर रे से माने 5660 कहि पारंती वर्ड. 5 वर्ष रे से माने 9660 कहि पारंती. 6 वर्ष रे से माने 14700 वर्ड कहि पारंती. 7 वर्ष रे से माने 21200 कहि पारंती. 8 वर्ष रे से माने 26300 वर्ड कहि पारंती. और 10 वर्ष रे से माने 34300 वर्ड कहि पारंती. देखो तो पीरियड कहते हैं adolescence रे language development the myriad emotions aroused in the adolescent as a result of his starlight physical development in this period deeply influence the development of his linguistic ability. Adolescents develop interest in reading literature. The growth of their imagination storms them towards poetry, stories and painting with the result that they express their feelings through these media. Love letters written in adolescence are marked with the very raw sentiment and hence they are remarkable, beautiful and affecting. Each word conveys the deepest meaning. देखो एतरे कोन करंती ना तांकर लैंग्वेज पयंती तांकर से माने लेटर लिखिबारे सक्षम मध्य होई जाई थांती. नेक्स्ट देखो चाइल्ड इन डिफरेंट सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देखो एटी कोन देछि ना culture and society may mean different things to different people. For instance, society is defined as an association with one's fellows, the system of customs and organization adopted by a body of individual, the aggregates of people living together in a more or less or direct community. Next देखो society refers to the aggregate of people living together. Next देखो socialization देखो Next point देखो socialization कौन देछि ना socialization is the process of preparing the children to fit well in the society. Society fit रहबे ताको भलो रे fit रहबे ताको एतरे preparing करा जाई थाए देखो into which they are born. The family, the school, neighborhood, community, religion, media, cinema, etc. are some of the chief agency of society to socialize the human beings. It is a slow and continuous process. It starts at birth and ends with death. देखो एटा बढ़ जाई थाए तापर नेक्स्ट देखो डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन देखो अकॉर्डिंग टू ड्रेवन को मतलब देखो सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच द इंडिविजुअल इज अडॉप्टेड टू हिज सोशल एनवायरनमेंट एंड बिकम ए रिकॉग्नाइज्ड कोऑपरेटिंग एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ इट. देखो नेक्स्ट देखो कोन देखो कुक रिपोर्ट करजंती एटा को सोशलाइजेशन एज ए प्रोसेस एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच चिल्ड्रन टेक ऑन देमसेल्व्स द वेरिएशन सोशल रोल्स सोशल लर्निंग एंड डेवलपमेंट टास्क. तो ये थिला हमर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर रो परसेंटेज इन चाइल्ड डेवलपमेंट रो यूनिट 3 रो हमर किछि पार्ट. तो आई होप आपन मानको भलो लागिथिबो. लाइक शेयर कमेंट करिया पे जमर भी भूलिबेनी. थैंक्स फॉर वाचिंग.